Hi everyone, welcome back to the channel guys. If you see the toppers marks who have cracked RBI Grade B exam over the years, there is one common thread that the second most scoring paper for each one of them in most of the cases would be descriptive English. ESI बहुत मुश्किल आता है, उसमें 50-55 स्कोर करना is also a very good score. FM is always the highest scoring, but in between comes the descriptive English और ये बहुत ज़्यादा underrated सब्जेक्ट है, लोग इसकी प्रिपरेशन नहीं करते एंड आई कैन टेल यू अगर इस सब्जेक्ट में जोर लगाया जाए, पीपल हु आर हार्डली स्पेंडिंग 20-30 आवर्स, आई एम जस्ट आस्किंग देम टू स्पेंड 50-60 आवर्स और अच्छे से जोर लगाया जाए, यू कैन इजीली इंक्रीज योर स्कोर बाय 5 to 7 or 10 marks in this subject. So in this video I am going to tell you 5 master tips which can help you 75 plus, literally 75 plus in descriptive English, and that should be your target. You should not think कि सर ये पॉसिबल नहीं है. ये बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है और हमें ये लेना है, बिकॉज ईएसआई में तो आई कैन नॉट आस्क यू कि यार आप 60, 55, 70 टारगेट करो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू बी द लेवल ऑफ द एग्जाम. तो इस एग्जाम को हमें नहीं छोड़ना है, इसमें हमें 75 प्लस स्कोर करना है. कैसे करना है, हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द डी डे, वो 5 मास्टर टिप्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा. अच्छे से सुनिएगा, सुनने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू इंप्लीमेंट इट. वो आपको करना है, मेरा काम है बताना, आपका काम है इंप्लीमेंट करना. सबसे पहले briefly I'll tell you the scope. In the descriptive English paper you get 3 questions, essay, précis and comprehension. You get total of 90 minutes. Essay में you get options of 4 or 5 essays and you have to write one. Generally these 4 or 5 essays are from diverse topics. One could be from economy or finance, say mergers, demergers, demonetization, technology and internet, say impact of social media on communication, social media is a boon or bane, something on those lines. Then abstract philosophical topics आते हैं, then social issues like women empowerment, illiteracy, dowry system, drug abuse, इन पे आते हैं. तो ये 4 areas से आएंगे. You have to choose your topic and most probably before your exam you would also have to choose the areas in which you would like to attempt your essay, और उस area में maximum topic आपको cover करने पड़ेंगे. Second is your précis, which normally comes from leading newspapers of India. उसमें से एक paragraph उठाकर आपको दे दिया जाएगा and you would have to write a précis on that. The third is reading comprehension, which can be on different topics each year. तो इसमें कोई सेट नहीं है कि यहीं से आएगा, इस तरह का ही टॉपिक आएगा. They can give you any type of topic and they have been giving diverse topics if you see the past year papers. तो इसमें it's the same thing which we have been doing in our board exams, 10th और 12th exams. आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे पैराग्राफ के ऊपर and you would have to write your answer. तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन में. So this is the entire scope. Now how to prepare, how to practice, वो मैं बताने वाला हूं. 5 master tips. The first one is essay. Essay writing is one of the most important aspect. ज्यादातर essay 40 marks का आता है, précis और comprehension 30 marks के आते हैं. Essay लिखते हुए it's always good to back up your thesis, whatever you are writing in your argument. For example, you're writing an essay on illiteracy, something of that sort, and suppose there are 2 ways to write this. First way is India is having very high illiteracy rate due to vast population in rural areas and something on those lines. Here you're just giving information without any factual confirmation, without having any veracity of what you are talking about, any government data, any report by authentic organization. You are not mentioning anything. और इसी से रिलेटेड अगर आप दूसरे चीज को पढ़ेंगे, as per the UNESCO report of 2017-18, 35% of the world's illiterate population resides in India. So here you are able to add that punch, add that authentication कि भैया ये यूनेस्को की रिपोर्ट है जो बता रही है कि 35% of the world's illiterate population resides in India. So when you read both these lines, you will understand the difference, and I'm sure you will be able to consciously absorb the fact कि जो second introduction है या second line आप जहां भी लिख रहे हैं body में, conclusion में, it is going to add more weight to your argument and examiner is certainly going to give you some extra marks. This is called backup thesis, that you back up whatever argument you are giving through some authentic report, through some authentic data. ये बहुत जरूरी है, report का नाम लिखना, authentic data लिखना. ये आप कैसे कर पाएंगे? इफ यू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन राइटिंग सम डेटा पॉइंट्स ऑन डिफरेंट एरियाज. आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करने. ऑन इलिटरेसी यू माइट
remember 5 data points and their sources. On drug abuse, you might remember 6 data points along with their sources. Women empowerment, dowry system, in each of these you have to jot down some points along with their sources, और जो भी टॉपिक आएगा उसके पॉइंट्स वहां पे you have to somehow fit in your essay in the right context, right? ऐसा नहीं randomly पहली 6 लाइनें वही लिख दी जो आपने लिखी हुई थी. You have to fit in the context. ये चीज याद रखना. First is backup thesis. The second one is preparation and practice. अब इंग्लिश में preparation क्या है? It's a very basic one. You need to understand the ground rules of writing an essay, prescient comprehension, which I assume you already know, but you need to polish it a little bit. I know a lot of students are not comfortable with the ground rules. For example, many of you would not know प्रेसी में हेडिंग आती है नहीं आती है, प्रेसी सेकंड फॉर्म में लिखी जाती है, थर्ड फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म में, प्रेसी में डेटा लिखना चाहिए या नहीं, the one which is given in the paragraph. So to all these questions, you need to understand the common ground rules. And once you understand the common ground rules, the next thing you need to do is to practice. और practice कैसे करेंगे? It's very simple. Read the editorials. कहाँ से? हिंदू से पढ़िए, लाइव मिंट से पढ़िए. On alternate days, you can read both these newspapers. And whatever you read, after 3 days, ठीक है? After 3 days, you type it. Exam is online. पेन पेपर पे मत लिखिए, it is not going to benefit you. Type it. Where in the notepad, do not write in the word document, because word document में लिखने से आपके सारे mistakes auto correct हो जाते हैं. Spelling हो, grammar हो, punctuation हो. You are not going to get any value add for your writing unless and until you are able to identify your mistakes. वो तभी identify होंगी if you write in a notepad. So editorials पढ़िए. After 3 days, type it in the notepad. Why after 3 days? Because I want you to express yourself and do not cram anything and just write it. No, I just wanted to express your understanding. So after 3 days, you will not remember the exact language. You will just remember the core idea and you will have to express it in your own words. And once you have typed it, you copy it, go to the website grammarly.com, paste it there. And see, it will show all your errors. Consciously observe those errors for a certain duration. You will realize how many mistakes you are making. Many of the mistakes, like spelling mistakes, you already know, but you are making it while you are typing it. Many of the grammatical mistakes, you already know how to write, but you are making it while typing it. तो ये करने से number 2 जो मेरा है, which is like errors identification. Grammatical errors, spelling errors, punctuation errors, observe all those errors, consciously observe them. We do same mistake repeatedly over and over. You need to gain control over them. And the third point is about the typing speed. If you type daily, your typing speed is going to improve. And it's very, very important. In the exam, time is one of your major enemies. And if you are able to handle it, if you are able to manage it, I would say that half the battle is won. तो यहां से हमें क्या गेन होगा? एरर्स इंप्रूवमेंट. एंड द थर्ड वन इज टाइपिंग स्पीड. और भी चीजें हैं. यू विल लर्न टू राइट इन अ स्ट्रक्चर. यू विल ऑल्सो गेट टू नो about good content, because all these editorials are very enriching in the content. But my main things that I want to take it for you to learn is error recognition and improvement, and the typing speed, number 2 and number 3. And the number 4 is about the interface. How much ever you may read, how much ever you may practice, till the time you get acquainted with the interface that will come in the exam, you will never be able to fight it out in the exam. The problem is that the interface you get in the exam is not something you will get the entire screen what you see on your laptop, on your desktop. It would be pretty small. The amount of screen that you get in the exam would be something like this. If this is my overall screen, it would be only this part of your screen where you would have to type. Even smaller than that, I would say. अगर ये मेरी पूरी स्क्रीन है, उस पूरी स्क्रीन में मुझे इतना ही बॉक्स मिलेगा, इससे भी कम मिलेगा, where I would have to type. And the problem on typing on such kind of interface is, the moment you type 6 lines, it will start scrolling vertically. Vertical scroll. And we are not used to vertical scroll. Right? So, the moment you write in a vertical, the moment you start writing in a vertical scroll, the problem is
you always have to go up and down to find out what I had written earlier and how to make it link it with now. So that will be an additional distraction which will break your momentum. बाकी इंटरफेस में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, the type of keyboards you get there. I see a lot of complaints being made by the candidates कि कीबोर्ड चल नहीं रहा था, कीबोर्ड एफिशिएंट नहीं था, मतलब उस पर मजा नहीं आ रहा था टाइप करके, बिकॉज वी आर यूज्ड टू सम न्यू एज कीबोर्ड्स, मतलब ऐसे देख रहे हैं आप, सोफिस्टिकेटेड, स्मॉल कीज, स्लीक. वहां पे हो सकता है आपको ऐसा कीबोर्ड मिल जाए या ऐसा मिल जाए. इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, सो यू विल नेवर रियलाइज के आपने एक टाइप के कीबोर्ड पे प्रैक्टिस की है, और यू वुड हैव practiced on your laptop, where we are very much comfortable. The moment I sit on some other screen where I've had a different keyboard, I struggle. So the same thing will happen with you, and when that happens directly in the exam, I know, I mean, it can be really frustrating. तो आप एग्जाम से पहले ही बहुत सारे डिफरेंट इंटरफेसेस और कीबोर्ड्स पे काम करके जाइए, 10 तरह के कीबोर्ड लाइए. डू नॉट लीव एनीथिंग टू चांस, बी प्रिपेयर्ड एज मच एज यू कैन. जितना अभी स्वेट करोगे उतना जंग में खून कम बहेगा. ठीक है. द नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट. सो दिस वाज नंबर 4 इंटरफेस. नंबर 5 इज ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट एंड टाइम मैनेजमेंट. Time management is very, very crucial. Maybe you're not able to see the exact data here. It is very coming bright, I think. But this is essay, this is Prezi, this is comprehension, and this is proofreading. I have broken down your 90 minutes into 4 areas: essay, Prezi, comprehension, and proofreading. Essay is 30 minutes out of 90 minutes. Comprehension 30 minutes, Prezi 25 minutes. That makes it 85 minutes, and the remaining 5 minutes for proofreading. Proofreading is very, very important in my point of view. ये एक ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट है जो आपको करना पड़ेगा. इट कैन बी कस्टमाइज बेस्ड अपॉन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, बट ये एक आइडियलिस्टिक टाइम मैनेजमेंट है विच आई हैव आल्सो लर्न फ्रॉम टॉपर्स. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट व्हिच कैन अगेन बी कस्टमाइज्ड. बट व्हाट आई लर्न फ्रॉम टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल इज पहले ऐसे, फिर कॉम्प्रिहेंशन एंड में नहीं. बिकॉज व्हाट हैपेंस इन कॉम्प्रिहेंशन इज के काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, और सपोज कीजिए आपका एक क्वेश्चन रह गया एंड में, वो एक क्वेश्चन वुड बी से अराउंड 6 to 7 मार्क्स, और आपने जो चीज अटेम्प्ट नहीं की उसमें 0 मिलेगा. लेकिन अगर आप लास्ट में प्रेसी अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड यू नो कि अभी 2 ही मिनट बचे हैं, यू विल समहाउ ट्राई टू टाइप फास्ट एंड रीच टू अ कंक्लूसिव एंड. मतलब शायद एग्जामिनर को पता ही ना चले कि आपने कुछ छोड़ा है. आपको लगेगा मैंने कुछ छोड़ा है, बट शायद एग्जामिनर को ना लगे, बिकॉज ये एक चंक है एंड यू विल बी एबल टू रैप इट अप अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि टाइम कम है. कॉम्प्रिहेंशन के केस में देयर आर क्वेश्चंस व्हिच आर ट्रीटेड एज डिफरेंट चंक्स. आपने एक क्वेश्चन अगर छेड़ा भी नहीं है उसमें आपको 0 ही मिलेगा. देयर इज नो चांस यू कैन गेट इवन 4 or 3 मार्क्स आउट ऑफ 6 or 7. तो कॉम्प्रिहेंशन को पहले करो ताकि कोई क्वेश्चन ना आ रहे, फिर प्रेसी करो. प्रेसी में अगर 25 नहीं 20 मिनट भी मिलेंगे, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रीड इट एंड मैनेज योर टाइम. तो ये ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट और ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं आपको, रीडिंग एडिटोरियल्स, टाइपिंग इट, practicing on the interface, practicing on different keyboards, practicing as per time limit, and order of attempt, ये सारी चीजें is more of a practice which you have to do daily or alternate day, और मे बी टाइम कम है तो twice a week. लोग twice a week भी नहीं कर पाते. टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो जॉब भी नहीं है भैया, सीधा समझ लो. टाइम नहीं है तो जॉब भी नहीं है, आपके लिए नहीं मिलेगी ऐसे. Either you have to be really exceptional, लोग 3-3 साल लगे हुए हैं तब जाके सिलेक्शन हो रहा है. आप चाहते हैं कि बस 3 महीने पढ़ूं और डेली आधा घंटा पढ़ूं, हो जाए, नहीं होगा, फ्रैंकली नहीं होगा. तो ये करो प्रैक्टिस भाई. हफ्ते में 2 दिन ही कर लो. हफ्ते में 2 दिन भी करोगे तो 2 महीने में इट वुड बी अराउंड 18-20 days, which is really, I mean, it is nothing less than a proper preparation अगर आप इतना टाइम लगा लो. और you will gradually see the improvement. Descriptive English is something where you cannot imagine के मतलब आज मैं शुरू करूं और कल कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो जाए, because it's a skill. It's not something that I've taught you and now you can attempt the objective question. It might take time, but the results would be so fruitful that you might be able to see your rank up by 500 or 600 or maybe by 1000, क्योंकि वो 6 मार्क्स में कम से कम 1000 बच्चा होता है जो आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में ज्यादा लाके कर सकते हो. ठीक है गाइज, एंड दिस इज RBI Grade B गाइड बुक. इफ यू आर न्यू टू RBI, you can get all the information related to RBI in this guidebook. 3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं: डिटेल्ड सिलेबस,
previous year questions with solutions and detailed book list and resources, all you will find in this guidebook. And this guidebook can be downloaded for free. Go to the description of this video. There is a link. Click on that. Download this. There is no charge. Read this. And I'm sure that you will get that extra dose of motivation you might have been looking for. So आज ही इसको download करो. And these are our flagship courses, Gold Pack, Silver Pack. Gold Pack is a one-stop solution for phase 1, phase 2 and interview. Everything curated, nothing to be read outside the course. No book, no website, nothing. Silver Pack is mainly for phase 2, but we will give you phase 1 GA also. And interviews anyway is part of this. So phase 1 का GA सिर्फ quant reasoning English you will not get in Silver Pack. ठीक है, तो अगर आपको वहां पे confidence है that you can handle it by yourself, go for the Silver Pack. And obviously, I'm sure you would like to check some sample material. So that is given in the description of this video. There is a link. Click on that, download the sample material, watch it, check whether that is quality, comprehensive. Only if you are able to build that trust, then only become a part of our community. And we would be very eager. We would be waiting for you to become part of EduTap community. And I'm sure there you will get a very good environment where lakhs of students like you are competing themselves in a healthy manner to get the most deserving job in India after UPSC. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.